Okay, the recording is on. Beta information. My camera is spotlighted. Okay, I think yes, sir. We can start then, if it's okay with you. We are, how many are in the class right now other than me? So one question is there. हाँ बेटा, क्वेश्चन ही पूछ लो पहले, कोई बात नहीं. हाँ जी. Sir, any chances of that physical classes are there in 1 month or 2 months? नहीं बेटा कॉम्पिटेंसी की होने के चांसेस कम हैं. ठीक है, क्योंकि nobody knows अभी. I doubt, and competency मुझे जहाँ तक लगता है कि even if they resort to physical classes, they may give the option between physical and online classes for the institutes and the candidates to take a call how do they want to do it. So मुझे लग रहा है कि competency may go online forever because इसका कोई adverse feedback अब तक है नहीं, unless you guys feel that physical classes would have been better. I don't know, what's your take on it? Physical. Sir, I would really say physical classes will be much better, sir. क्यों, क्या चीज मिस कर रहे हो बताओ तुम. टेल मी, पहले तो कौन से बैच से आप ये बताओ, फिर अगर आप पुराने 2 बैचेस के, देन आई विल आस्क मे बी मोर क्वेश्चंस. Sir, February batch, sir. February batch, तो बेटा you give some time. I think it's too premature to arrive at a decision. I have had 1 or 2 classes with you. तो उसमें what is it that you missed out? Tell me. And maybe I can do something. Why I'm asking you is not to pitch for online classes. Why I'm asking you is, if there is a problem you're facing, maybe there is a solution to it, yeah, in the online mode also. So what is it that is bothering you? सर एक्चुअली आपकी क्लासेस को छोड़ के और सारे क्लासेस में इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता. एक आप ही हो जो बोर्ड पे अच्छे से पढ़ाते हो, और बोर्ड पे जब आप बताते हो तो आप लिखते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग के दिमाग में भी चीजें धीरे धीरे बैठते जाती है. तो बेटा अगर नहीं, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको हाईलाइट करो. Maybe if people can't have this facility at their home, then we can have this facility at the institute. आप समझ रहे हो मेरी बात? We can always, अगर मैंने तो चलो घर में अपना ये सेटअप किया हुआ है, I've set this up at home. But if people don't want to set it up at home, the system can set it up at the center. The faculty can travel. Why you guys want to leave the comfort of home? मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था, तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है, बात ये नहीं है मेरा समझ में आ रहा है नहीं, लेट्स नॉट गेट इनटू नेम स्पेसिफिक इशू. ओके, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, you have all the right to raise those issues. I'm sure I know a little bit of it. I'm sure Sunil is not using the board, but Sunil Baba's classes, I doubt you'll have issues. Do you have issues in navigation as well? No sir, negative. So it's not the question of board or no board, you know. I think it's more of basically teachers, desire or willingness to interact with the class. I think it's more of what I can sense with my 25 years of teaching behind me is, it's more of a person specific probably comment that you're making. It has nothing to do with online and physical. तुम्हें देखो, physical में भी अगर जो मैंने पढ़ाना है वही मैंने online में पढ़ाना है. So अगर तुम्हारे को मुझे, what you can do is you can share with Sunil can share with me, or he can share with me also. You can share with him and give your feedback. We can always take it up with the concerned subject lecturer also कि क्या issues आ रहे हैं और उसके लिए क्या remedial measures है. That's the responsibility of the system to find, यार. I will never tell you कि नहीं ऐसा ही होगा, इससे अच्छा तो हो नहीं सकता. You never become perfect. There will always be scope for improvement for everybody, even at our end also. तो मुझे नहीं लगता, मुझे पता क्या लगता है, ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या है बेटा? ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा है, those who are outstation, they save money, so there is a direct financial impact on it. Even if you commute daily, there is a cost factor to it. Then उसके बाद क्लास में क्या होता है, मैंने फिजिकल क्लास जब खुद लेता था बेटा, क्लास के पहले 15 मिनट नहीं होंगे, लास्ट के 15 मिनट नहीं होंगे, कट पुट के वो क्लास
मतलब 75% of the total period is what you teach. उसमें भी बीच में हंसी मजाक होती रहती है. Effectiveness of teaching in my opinion is much more in the online classes. ये जितना भी दिसंबर जनवरी बैच ने देखा हुआ जो मैं ये कोरोजन वगैरह पढ़ा रहा हूँ, physical classes में I never taught this. I always used to share notes. So what I'm saying is that online classes they're much more impactful provided they are delivered in the right way and you receive them with an open mind. It's both way traffic, you know. It's not कि you are at fault or only the lecturer is at fault. तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं, तुम एक बार सुनील से डिस्कस कर लो. लेट सुनील कम बैक टू मी. आई विल सी व्हाट कैन बी डन. ओके, डोंट वरी. ठीक है बेटा. सर एक रिक्वेस्ट थी. हाँ सर, जो ये क्वेश्चन नंबर 4 सर जो अपने पार्ट ए में आता है ना सर, नेवल आर्ट में थ्योरी का है सर ये तो आप पढ़ाएंगे लेकिन सर क्या सर आप इसके नोट्स एंड डायग्राम सर शेयर कर सकते हैं क्या? बेटा नहीं करने को तो मैं कर लूंगा. इतनी तुम्हें हड़बड़ी मत करो यार, तुम बिल्कुल हड़बड़ी मत करो. अपने यू विल हैव इनफ टाइम टू प्रैक्टिस. सर हड़बड़ी नहीं सर, मैं क्या था कि वो थ्योरी याद करने से टाइम काफी लगता है. बेटा मैं वही कह रहा हूँ, जब इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी सिंपल थ्योरी है इसकी. तुम चिंता मत करो यार. लेट इट गो एट इट्स ओन पेस. मेरे को देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरे को तो क्या बेटा फॉरवर्ड ही करने मैसेजेस. टू मी इट डज नॉट मैटर. रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ. नहीं रिक्वेस्ट क्या, मैं तो भेज दूंगा. मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. इट हैज मतलब होल्डिंग द नोट्स, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट. बट आई एम श्योर December and January batch would agree कि the way it has come in the staggered manner, I think that's always better. What do you feel guys? December, January, or you feel should I bombard everything right away and? सर मैं जनवरी से ही हूँ सर. तो तेरे पास तो सारा आ चुका है. तेरे पास तो वाटर टाइट बल्कहेड इज मिसिंग है. नहीं अच्छा, फिर तेरे पास वो भी है वाटर टाइट बल्क. तुम्हारे पास कोरोजन आ गया बेटा, करेक्ट? यस सर. हाँ सर, कोरोजन आ गया. तुम्हारे पास हार्मोनाइज सिस्टम आ गया या खाली कोरोजन आया अभी? सर खाली कोरोजन आया सर जनवरी के पास. तो जनवरी में खाली कोरोजन आया, ठीक है. तो कोरोजन कर ले तू. उस पे मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल विद कोरोजन. मेरे नोट्स के अलावा कहीं और से भी करना हो तो वो भी कर लो. तुम कोरोजन को फर्म अप कर लो, बाकी मैं भेज दूंगा. अभी थोड़े दिन बाद हम वाटर टाइट बल्कहेड करेंगे तो वो आ जाएगा बेटा तेरे पास 2 मिनट में. टेंशन क्यों कर रहे हैं? ठीक है ठीक है सर. मैं सोच रहा था कहीं पर वो अप्रैल में ना आए. नहीं ऐसे थोड़ी होता है. you'll have ample time, don't worry. उसको मेरे ऊपर छोड़ दे यार, तो चिंता ना कर. Okay, now coming back to what we were doing the other day. पहले तो बताओ ट्रिम टाइप ए प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन तुम्हें तंग कर रहा हो, कोई कंसर्न हो, या whatever we discussed. Only trim type A. I'm not talking of dry docking right now. Then I'll go to dry docking. ट्रिम टाइप ए में अगर कोई समस्या हो तो बोलो बेटा. नहीं सर, अभी तक नहीं. बस तो मेरे को इससे ज्यादा चाहिए नहीं. अगर तुम्हारे में और आगे के कोई क्वेश्चन आते हैं तो दे विल बी पार्ट ऑफ योर प्रायर लर्निंग. तो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ऑल्टरनेट क्वेश्चन छोड़ के कर लेना, ताकि तुम्हारा पूरा स्पैन इसका कवर हो जाए. ठीक है, मैं तो उतना ही कर रहा हूं जितना मुझे ड्राई डॉकिंग में चाहिए, सो दैट वी डोंट फेस प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ वी गो बैक टू देन ड्राई डॉकिंग एंड ग्राउंडिंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट दैट डे. ओके, उस दिन मैंने कहा था कि आपने बेस्ड ऑन द शिप्स डॉकिंग प्लान आपने सेंटर लाइन ब्लॉक्स ले कर दिए, आपने साइड कील ब्लॉक्स ले कर दिए, एंड अ शिप is taken into the dock. So ship, usually we prefer a ship to be slightly trimmed by stern. Why slight? I told you that day also, we'll discuss later. But why by stern? Because if all is under our control, we would like the stern frame to make the first contact, as it is specially strengthened for this purpose. So ab ship gaya, my elbow represents the stern part of the ship. Here is the block, my palm. There is some under keel clearance. Now you start pumping out. UKC reduces. And at some stage, the depth in the dock, and I said that day also, that when I say depth in the dock, I mean above the blocks. So there comes a stage when the depth in the dock becomes exactly equal to the draft aft. When the two become equal, the stern makes a very, very light contact with the block. Okay? There is nothing happens. If
हमारे उस दिन के एग्जाम्पल में अगर पीछे 7 मीटर था तो अभी भी 7 मीटर ही ड्राफ्ट है, आगे का ड्राफ्ट उस दिन 5 मीटर था तो अभी भी 5 मीटर है. So underwater volume has not changed. So in this condition, though the stern is making a light contact with the blocks, but the full weight of the ship is balanced or supported by the buoyancy. Why? Because the underwater volume has not changed, so there is no reason for buoyancy to change, and hence the stability of the vessel has not undergone any change. The issue comes if the further pumping out of the water takes place. That means अगर उसी values को लेके जाएं 5 और 7 मीटर, तो जब 7 मीटर पानी के डेप्थ हुई, stern makes a light contact with the block. But अब, and all this while the ship was coming down as the water level was coming down, and the water line in respect to the ship's hull remained unchanged. But after the contact has been made, if now you drop the level further, there is no space for the stern to go further down because it has already contacted the block. If stern cannot go down, now that means पीछे का अब level is falling. अब तक तो क्या था, level fall हो रहा था, ship भी साथ साथ नीचे आ रहा था, draft 7 मीटर रहा. अब जब उसने नीचे contact बना लिया, now if the level falls, obviously as the level falls, the draft aft cannot remain 7. Why? Because stern cannot go down, and therefore the draft aft now starts reducing and remains same as the depth in the dock. जब depth dock की 6.5 मीटर हुई तो draft aft भी 6.5 मीटर हो गया. जब dock की depth 6 मीटर होगी तो draft aft 6 मीटर हो जाएगा. I'm intentionally not talking of the forward draft. So जहां contact हो चुका, it's a very, very important statement. At the point of contact, please remember this. At the point of contact, after the contact is established, the depth of the water and the draft change together. Whatever is the value of one, the value of the other one is exactly the same. This is after the contact has been established. And where does it happen? So it happens at the point or points where the contact has already been made. So this statement of mine would be valid only for those points where the contact is made, and is valid only after the contact has been made. Thereafter, why? Because thereafter the depth and the draft of the ship at that point will change together, as we saw in this case कि depth 6.5 हुई तो draft aft 6.5 मीटर हो गया, depth 6 हुई तो draft पीछे में 6 मीटर हो गया. अब जैसे जैसे ये that means now the water line with respect to the ship's hull has started changing. If the water line has started changing, that means the underwater volume has started changing, and obviously water line is falling, so therefore the underwater volume will reduce. And as the underwater volume reduces, the buoyancy support also comes down, because buoyancy is the weight of the water displaced. अब जैसे जैसे buoyancy कम हुआ तो क्या हुआ, जब 7-7 मीटर थे दोनों तो मेरे स्टर्न ने बिल्कुल लाइट कांटेक्ट किया, कुछ नहीं हुआ. लेकिन जैसे ही डेप्थ उसके बाद गिरनी शुरू हुई तो पार्ट ऑफ द वेट, दिस शिप starts exerting weight on the block, and as it exerts weight on the block exerts reaction as per Newton's third law, and you start experiencing an upthrust exerted by the block at the point of contact. You start experiencing upthrust at the point of contact. And to explain the effect of this upthrust, one group of naval architects consider that this upthrust is equal to a virtual discharge of weight from point of contact. That means, what do they feel? Here are the blocks. This is the center line blocks that I have drawn. Now, what do they feel is that once the ship
Okay, once the ship has made contact here, now this is when the first time light contact has been made. That means the depth is 7 meters, draft is 7 meters, light contact is made, draft forward remains 5 meters. But now when the level is further dropped, I am drawing a parallel water line. It does not remain parallel. You'll understand in a while. But for the first time, I'm just drawing a parallel line. Now the water line with respect to the ship has fallen because the ship cannot go any further down. When ship cannot go any further down, if the depth here is now 6.5 meters, then the draft here is also 6.5 meters. I'm not commenting on this draft, whether it becomes 4.5 or not. I'm absolutely silent. This leads to reduction in the volume of buoyancy. And so the buoyancy support to the vessel falls short of its displacement. And whatever is the deficit here, that is transferred to the blocks. That much weight is transferred onto the blocks. And this weight which is transferred to the blocks exerts an upthrust, and this upthrust is represented by P. Let us say if this volume produces a buoyancy of 9,500 tons, then obviously 10,000 minus 9,500 tons, 500 tons becomes the upthrust at that point in time. Correct, beta? जी sir. And this weight or 500 tons, as per one school of naval architects, is virtually assumed to be discharged from this place. What is this place? Vertically, it is at the keel. Longitudinally, it is at the after perpendicular. And its vertical location will impact the GM, and its longitudinal location will impact the longitudinal stability, that is the trim of the ship and the draft forward. Okay. As far as the effect from keel is concerned, if we discharge P tons virtually from here, it will lead a virtual rise of G, but we don't call it as rise of G because internally the weights have not changed. So we compensate it by calling it as virtual loss of GM due to dry docking. और इसका फॉर्मूला उस दिन हमने स्क्रीन जब मैं पीपीटी दिखा रहा था हमने बात की थी. It is the same as GG1 upwards, W into D upon W minus W. And when we substitute this, it became P minus KG upon W minus P. बेटा इस फॉर्मूले पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछो अभी. करेक्ट? करेक्ट सर. अब देखो इसकी इफेक्ट क्या हो रहा है. It is virtual loss of GM. My vessel entered the dock with certain GM. जब तक कांटेक्ट नहीं हुआ था, was there any change in GM? Say yes or no. Until the time the contact was made, was there any reason for GM to change? No sir, no. No sir. Very good. The moment contact has been made and level falls after that, it will bring the upthrust into picture, and the moment upthrust comes into picture, it will cause a virtual loss of GM. Correct, beta? Yes sir. Yes sir. And as the level falls, my question to you is, please keep expressing yourself. As the level falls, do you think the value of P will remain same, increase or decrease? No sir. Increase. Increase. It will increase. Very good. As P increases, the virtual loss is going to also increase as per this formula. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Correct. And it may happen at some level that the whatever GM I entered with may be negated by this virtual loss. And what happens when my GM becomes 0 or negative? My vessel becomes unstable, correct? Correct sir. और अनस्टेबल वेसल में क्या प्रॉब्लम होगी? अनस्टेबल वेसल में ये प्रॉब्लम होगी कि जब तक वो बिल्कुल वर्टिकल है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी कारण भी थोड़ा सा इंक्लाइन होगा तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लिवर बीइंग फॉर्म्ड, instead of righting lever, a capsizing lever would be formed,
and we know what will be the impact of capsizing moment. It will cause the vessel to capsize sideways. It will flip. It will. There is nothing that is going to stop the vessel from falling sideways. तो ये प्रॉब्लम हमारी कब शुरू हुई? वर्चुअल लॉस किस टाइम शुरू हुआ बताओ? After the contact, after the first contact made. Very good. After the contact, we reduce the water level below 7 meters. Very good, very good, very good. शाबाश. अब ये बताओ, कल हमने स्लाइड कांटेक्ट में नहीं हुआ ना सर? हाँ जी. लॉस स्लाइड कांटेक्ट में स्टार्ट नहीं हुआ ना, उसके बाद हुआ. You say slide और उसमें वो तो पंप आउट तो करते रहोगे ना बेटा. So we say it's the problem starts once the contact is made, right? जी सर. ठीक है. अब ये बताओ मेरे को, अब इस शिप को मैं स्ट्रेट लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं. मैं ब्लॉक्स को रब आउट, ये ऊपर से ब्लॉक्स को रब आउट कर रहा हूं यहां से, और इस फॉर्मूले को इस तरफ लिख देता हूं क्योंकि आई विल बी, you will need to see it again and again. P into kg upon W minus P. और ये शिप को अब मैंने लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, और मैंने जानबूझ के टेढ़ी बनाई है क्योंकि मेरी कील इंक्लाइंड है. ठीक है. अब यहां पर ब्लॉक है जिसपे ये कील टच हो रही है. यहां इसका सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है कहीं पर. ये शिप का आफ्टर परपेंडिकुलर है, ये शिप का फॉरवर्ड परपेंडिकुलर है. जब लाइट कांटेक्ट हुआ तो यहाँ ड्राफ्ट था 7 मीटर, यहाँ ड्राफ्ट था 5 मीटर. लेकिन जब when P comes into picture, what will be the effect of P on the longitudinal stability? So trim will go forward by head. म्यूट कर लो, किसी के माइक की नॉइज आ रही है, थोड़ा सा म्यूट. हाँ. So what will happen? Trim will change by forward by ahead. So this P would cause a better way of expressing. You're right. You're absolutely right. But a better way of expressing could be this P would cause a change in trim by head. Correct, beta? Correct. Yes, sir. Yes. How much will be the change in trim caused? ये trim type A के concept से बताओ. PDI MCTC. P into LCF sir. AF. AF. Very good. Why? Because this is the lever of P from center of flotation divided by MCTC. This is my trimming moment caused because of P, and this is divided by MCTC. So this gives me the change in trim. If the trim is changing in, initially the ship entered in our example by 2 meters by stern. Okay. यहाँ देखो, अब मैं दोबारा ब्लॉक्स बना रहा हूं. यहाँ पर इस लाइन में ब्लॉक्स हैं. अभी जहाज के 2 मीटर ट्रिम बाय स्टर्न थी, ब्लू लाइन पे वाटर लाइन था जब. अब इसलिए मैंने कहा था कि ये पैरेलल नहीं होगा वाटर लाइन, बट आई ड्रू इट पैरेलल इनिशियली. नाउ व्हाट हैपेंस एज द ट्रिम इज बीइंग कॉज्ड बाय हेड, so this initial trim of 2 meters by stern will start reducing, beta. Yes or no? Yes, sir. Correct? Yes, sir. There will come a stage when this trim will become 0, because trim caused becomes 2 meters by head. If the trim caused becomes 2 meters by head, then initial trim was 2 meters by stern. The resultant trim will be 0. Correct, beta? Yes. Yes, sir. Yes, sir. When look at this diagram. Look at this diagram where you have the blocks. What would happen when the trim becomes 0? This diagram will speak. Sir, vessel will sit on the blocks. Blocks overall. The vessel will sit on the blocks all along her length, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. When she sits on the all along the length, जब पुराने जमाने में नैरो कील के शिप्स होते थे, तो जैसे ही जहाज पूरा बैठता था तो साइड में शोर्स लगा देते थे ताकि अब जहाज साइड में फ्लिप ना कर सके. बट दे वुड डू इट ओनली व्हेन शी टेक्स टू द ब्लॉक्स ओवरऑल. आज के जमाने में हमारी फ्लैट बॉटम शिप्स हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारे सेंटर लाइन ब्लॉक्स होते हैं और हमारे बिल्ज कील ब्लॉक्स होते हैं, और जब उन 3 ब्लॉक्स की लाइन पर शिप रेस्ट कर जाता है, नाउ द शिप कैन नॉट टॉपल साइडवेज. करेक्ट बेटा? Yes. Correct. When will she touch all the 3 lines of blocks? When she takes to the blocks all along her length. When does she take to the block all along the length? When the trim caused by P becomes equal to the initial trim. Correct beta? जी सर. अब जब जहाज पूरा अच्छी तरह बैठ गया,
अगर उसके बाद मेरा जीएम नेगेटिव होता है तो उसका कोई इफेक्ट होगा? नो सर। क्यों क्यों नहीं होगा बताओ? यू आर राइट, बट क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था नेगेटिव जीएम विल बी ऑफ कंसर्न only when the vessel tilts. If the vessel does not incline and remains absolutely spot on vertical, then there is nothing that can topple the ship. Correct, beta? Correct, sir. Okay. तो हमारा कंसर्न जीएम पॉजिटिव है नेगेटिव कब खत्म हो जाएगा? जब जहाज पूरा का पूरा बैठ जाएगा. करेक्ट? Yes. तो मेरा जो प्राइमरी कंसर्न था जीएम को मॉनिटर करने का, based on this discussion, which is the window of pumping out the dock in which I need to monitor my GM? From where P touches From this the time it touches the block till the time the trim is zero. Very good, shabash. So my period of concern is the time from the vessel makes first contact. Now I'm not saying aft forward come. From the time vessel makes first contact with the blocks until the time she sits overall. Correct, beta? Yes. करेक्ट? क्योंकि उससे पहले क्यों नहीं था कंसर्न कि जो जीएम था वही रहेगा? उसके बाद क्यों नहीं कंसर्न है? बिकॉज शी इज एडिक्वेटली सपोर्टेड. ये जो पीरियड है जिसकी हमने अभी बात की है बेटा, प्लीज टेक डाउन दिस टर्म. दिस पीरियड इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पीरियड. और ये बेटा तुम्हारे थियरी में भी आता है और ये तुम्हारे ओरल्स में भी पूछा जाता है. व्हाट इज द क्रिटिकल पीरियड in the dry dock? And when I'm saying dry dock here, I mean the graving dock. So the critical period in a graving dock is the period from the time vessel makes first contact with the blocks until the time she sits come overall on the blocks. Got the definition, beta? जी सर. सर एक डाउट था. हाँ बोलो. ये हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर, when the ship makes first contact with the blocks till the trim will be zero, sir. बेटा वो trim will be zero only if the blocks are all horizontal, right? जरूरी नहीं है मेरे सारे blocks horizontal हो. करेक्ट? ओके सर. नहीं सर, आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था बेटा मैंने जो स्टेटमेंट दी थी वो ये मान के दी थी कि सारे ब्लॉक की टॉप्स हॉरिजॉन्टल है. करेक्ट? Okay. So I don't want to make it a specific case. I want to say when she sits overall, right? Okay, sir. In this scenario, yes, what you are saying will fit in. But बिल्कुल इस टॉपिक के एंड में हम बात करेंगे, बिल्कुल एंड में, कि every time the trim need not be zero when she sits all along the length. ये पूरी एक्सरसाइज निकलने के बाद ये इशू पे मैं बात करूंगा. So instead of just limiting our statement to very specific case, a better way would be from the time she makes first contact to the time she sits overall, right? Okay, बेटा? Done? इस पीरियड को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पीरियड. ठीक है? अब इस क्रिटिकल पीरियड में भी सोचो सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन कब होगी और क्यों? इस क्रिटिकल पीरियड में भी सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन इनिशियल फर्स्ट टच पे होगी. आखिरी में जब बैठने वाला होगा सर, पूरा बैठने वाला होगा. Okay, I got two responses from the class. Somebody said at the time of first contact. Somebody said just when she's about to sit overall. Does any side want to back off and support the other? Review your stance and let me know. At the time of first contact, if it tilts and if the GM becomes negative before the ship is fully upright, sits on the blocks, then it can be a problem. नहीं, परंतु बेटा इस पूरे क्रिटिकल पीरियड में मेरा क्वेश्चन ये था, ये क्रिटिकल पीरियड में which starts when the first contact is made till the time she sits overall, अगर इस क्रिटिकल पीरियड में सबसे ज्यादा डेंजरस मोमेंट कौन सी हो सकती है हमारी? सर व्हेन जीएम बिकम्स जीरो. मुझे नहीं पता जीएम तो अगर आपके पास काफी जीएम होगा तो लास्ट में whether it will become zero or not, that is a case. First contact में जब अपना बेटा ओके, why do you say first contact पे? फर्स्ट कांटेक्ट पे तो P बहुत कम है, P कम है तो वर्चुअल लॉस भी कम है. करेक्ट? फर्स्ट कांटेक्ट के बाद शिफ्ट बुयांसी से शिफ्ट हो रहा है वो,
करेक्ट. So इन बेटा अब मैं कहता हूँ क्रिटिकल पीरियड में सबसे डेंजरस मोमेंट कौन सा है. तो मेरा पूछने का मतलब था, लेट मी गिव यू मोर हिंट, कि क्रिटिकल पीरियड में सबसे ज्यादा लॉस ऑफ जीएम कब होगा. अब चलो इसका जवाब दे दो. तो जब अपथ्रस्ट सबसे मैक्सिमम होगा, जब अपथ्रस्ट पी की फोर्स सबसे ज्यादा होगी. तो कब होगी वो मैक्सिमम फोर्स? आखिरी में सर, ऑलमोस्ट आखिरी में. So last में when just sitting on the block. Correct. So in amongst some, now I'm talking to the person who said कि first contact होगा. बेटा I'm addressing to you, and if you are not in agreement, please let me know, speak out. What I am saying is, ये पूरा का पूरा critical period है. अगर 10 mm पानी गिरने पे जहाज अनस्टेबल हो जाएगा तो वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. I'm not saying that. I'm saying पूरे के पूरे critical period में भी, which is one particular moment when it is the most critical and where the loss of GM would be potentially maximum. The maximum potential loss of GM during the critical period would be when she is just about to sit overall. Correct, beta? हाँ भाई, जो कह रहे थे फर्स्ट कांटेक्ट वाले बेटा, आई एम टॉकिंग टू यू. यस सर. सर मैंने फर्स्ट कांटेक्ट इसलिए बोला था सर, इनिशियली जो ब्लॉक्स पे आप अलाइन करेंगे सर, दैट वुड बी एज पर फर्स्ट कांटेक्ट ना सर. नहीं, ब्लॉक्स पे अलाइन करोगे, फर्स्ट कांटेक्ट में समझा नहीं. ब्लॉक्स पे तो सी अलाइनमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डॉकिंग एंड अलाइनिंग द शिप ऑन द ब्लॉक्स. दैट्स अ डिफरेंट इशू. नाउ वी आर ओनली डीलिंग विद द स्टेबिलिटी एस्पेक्ट, राइट? यस, देन विल बी फाइन. है ना? तो एज फार एज स्टेबिलिटी इज कंसर्न, आपका मैक्सिमम अपथ्रस्ट ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड, आई एम नॉट सेइंग मैक्सिमम वही होगा. आपका मैक्सिमम अपथ्रस्ट विल बी, नाउ लेट पे अटेंशन टू दीस सेंटेंसेस व्हिच आई एम मेकिंग. Your maximum upthrust will be always equal to the weight of the ship, and that will come into picture when the entire ship is dry. That means level falls below the top of the blocks. Correct, beta? Yes, sir. ठीक है, वो अलग बात है. उस टाइम अपथ्रस्ट पूरे सरफेस पे एक्ट कर रहा होगा, right from forward to aft, because she is sitting comfortably on the blocks, right? सर एक डाउट है, ये जब ब्लॉक्स पे वो सिट करना शुरू करेगा वेसल, तो वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे जैसे वेट शिप का जाएगा ब्लॉक्स पे, और वो अपथ्रस्ट उतना अप्लाई करेगा. बेटा अपथ्रस्ट की वैल्यू तो उतनी होगी जितना ही शिप की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट में से whatever is supported by buoyancy, उसका डिफरेंशियल विल बी द अपथ्रस्ट. तो लास्ट मोमेंट तक सर तो ऑलमोस्ट वो डिस्प्लेसमेंट का वेट तो ले लेगा सर, उसका भी तो इफेक्ट रहेगा कि ऑलमोस्ट वो ब्लॉक्स के बीच में स्टेबल हो चुका होगा लास्ट मोमेंट तक. लास्ट मोमेंट तक तो ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट. नहीं बेटे, हम लोग क्या कह रहे हैं, एक तो हम ये मान रहे हैं कि शिप जो है मेरी स्ट्रेट बीम है. हमें पता है शिप की अपनी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शंस, राइट? we are not going to get into those specifics. They will become ship specific discussion. Okay, कि कहाँ सैग हुआ, कहाँ हॉग हुआ, that will be a ship specific issue, right? When we are discussing, we are considering the ship is a straight beam, right? Okay. And if she enters like this, the keel is straight, then she makes contact here. अब ये जब तक पूरा नहीं बैठेगा तब तक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट रहेगा. वो अलग बात है कि क्लियरेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट? ओके, हाँ, यस, राइट. जब पूरा का पूरा बैठेगा, जब एक ही साथ बैठेगा, राइट, इन सच अ सिनेरियो. ओके, सच एन आइडियलिस्टिक सिनेरियो, राइट? यस सर, नो आई गेट. तो बेटा मैक्सिमम जो मोस्ट डाइसी सिचुएशन is when the ship is about to sit overall. She's just about to sit overall. Why? उस टाइम तक adequate support भी नहीं है, और उस टाइम तक P भी उस फेज में काफी बढ़ चुका है, तो वर्चुअल लॉस भी बढ़ चुका है. So in the entire critical period, the most critical instant will be when the ship is just about to sit overall. Why? Because at that point in time, ship is neither adequately supported nor adequately supported. Nor तो क्या होगा? I think I'll rephrase it. At that particular point, the ship is not adequately supported, and at the same time, the virtual loss of GM would be maximum within the entire critical period. So हमारा अगर मेरा शिप क्रिटिकल पीरियड के बिल्कुल एंड में अगर कंफर्टेबल है,
तो दैट मीन्स पूरे क्रिटिकल पीरियड में ठीक रहेगा ना फिर तो, करेक्ट बेटा? यस भाई जहां पे मेरा मैक्सिमम लॉस हुआ क्रिटिकल पीरियड खत्म होने पे, ये वाला जो इंस्टेंट है इसके लिए स्पेशल नाम दिया गया है बेटा, एक और टर्म लिख लो अपने रजिस्टर में, क्रिटिकल इंस्टेंट। Critical instant is the instant when the critical period is coming to an end. When the vessel is just about to sit overall. That is the instant which is called the critical instant. Now I'll explain to all those who were saying at the time of first contact or whatever doubt you had, why we are talking of this, कि किस पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का इशू हो सकता है। हमने कहा क्रिटिकल इंस्टेंट पे। तो क्या होगा, जब मैं शिप को डॉक में लेके जाना है तो मैं जाने से पहले अपनी स्टेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा एट क्रिटिकल इंस्टेंट। एंड व्हेन आई एम सेइंग स्टेबिलिटी आई मीन जीएम हियर। I will calculate my GM at critical instant. What is my residual GM at critical instant after allowing for all the possible losses? तो जो अगर मेरा critical instant पे, if I am still with positive GM, so obviously इससे पहले I will have more GM than what I have at the critical instant. Do you agree with that? हाँ जी सर। So जब हम डॉक में जाते हैं हम क्या करते हैं, हम अपने शिप का जीएम क्रिटिकल इंस्टेंट पे कैलकुलेट करते हैं कि क्रिटिकल इंस्टेंट पे मेरा जीएम कितना होगा। और अगर उस टाइम मेरा जीएम काफी कम है या नेगेटिव होने के चांस है तो वी विल मेक श्योर वी ऑल्टर द थिंग्स, ऑल्टर द कंडीशन इन विच द शिप इज गोइंग टू एंटर एंड एंश्योर that at critical instant the ship has adequate GM. And when adequate GM by it means adequate positive GM. अगर critical instant पे ship comfortable है then the ship is comfortable through and through, no problems. Why? Because critical instant के बाद she is adequately supported. उसके बाद negative GM होगा, हो जाने दो, कोई problem नहीं है। Problem will be if during the critical period ship goes into unstable equilibrium, then you are inviting trouble. ये जो दो मैंने टर्म बताई हैं, जो मैंने इसके साथ नैरेटिव दिया है, इसको जरा एक बार सोचो, उसको अपने मन में रिकॉल करो, और कोई डाउट है तो मुझे बोलो बेटा। I give you 10 seconds to have a quick recap and let me know if हाँ जी बेटा, कोई डाउट्स? आर यू ओके विद व्हाट आई सेड? ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये आपने मेरी काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्लास ने ही मुझे ये फॉर्मूला डिराइव करा दिया, क्लास ने ही मुझे ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया। इससे भी हम पी निकाल सकते हैं, ये पी से वर्चुअल लॉस निकाल। अब ये बताओ मुझे, दो चीजें बताओ, व्हाट इज पी इक्वल टू, हाउ कैन वी फाइंड पी, whichever way you want to know, tell me. At any stage if I have to find P, what are the different ways I can get P beta? Sir, if we have MCTC LCF AF. Okay, and what is this beta? What is this? Change in trim, sir. Okay, okay, change in trim. Okay, now you tell me, after the critical instant would there be change in trim? After that, no sir.
Because एक बार जहाज बैठ गया फिर तो E1 कील ही रहेगा ना, और पानी के ड्रेन आउट करते रहो, पंप आउट करते रहो, राइट? जी सर। सो ये फॉर्मूला अगर आपने लगाना है P निकालने के लिए, PC is equal to P into AF upon MCTC. You are right, this can be used to calculate P provided हमें TC पता हो, AF पता हो, MCTC पता हो. But as the trim change takes place only during the critical period. Now pay attention. This method can be deployed if required only during critical period and not applicable after critical instant. Do you agree with this? ठीक है बेटा? इस फॉर्मूले not applicable after the critical instant. After sitting होगा ना सर, क्योंकि critical instant is just before sitting. Critical instant is there is only a fine line between just sits first time, right? And the critical instant. Critical instant is when she just, what do we mean by just sits? Means लाइट कॉन्टेक्ट तो अलोंग द लेंथ हो गया है, लेकिन कुछ वेट ट्रांसफर नहीं हुआ ब्लॉक्स पे, जैसे कि 7 मीटर ड्राफ्ट डेप्थ में हुआ था. स्टर्न ने कॉन्टेक्ट तो बना लिया था, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं आया था, राइट बेटा? जी सर जी. Okay, so this method can be used only during the critical period. Once the vessel is outside the critical period, as there is no further change in trim, then this method cannot be, this formula cannot be deployed for using calculating P. What is the other method? पूरी मेरी शुरू से जो मैंने डिस्कशन उस दिन भी किया था, आज भी किया था मैंने, 9,500 10,000 का एग्जाम्पल भी लिया था, उसको याद करते होता. What is the other way if I want to find out at any time the value of P? If we have virtual loss of GM. लॉस ऑफ वेट सर, वेट ट्रांसफर. वर्चुअल लॉस ऑफ जीएम तो पी के बिना निकलेगा ही नहीं ना सर. वेट ट्रांसफर सर. हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? प्लीज एलिबरेट लिटिल मोर. जो वेट ट्रांसफर वाले बोल रहे, थोड़ा सा और एलिबरेट करो. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. लेट मी जस्ट टेल यू दैट, सो डोंट बैक ऑफ. ठीक है, बताओ भाई. सर वॉल्यूम स्टैटिक ड्राफ्ट. देखो, हमारे पास शिप की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट? व्हेन आई से W here, that means the actual displacement of the ship, correct? है ना? जी सर. ओके. जिस भी स्टेज पे मुझे P निकालना हो, if I can find out the value of buoyancy at that stage or draft, अगर बॉयंसी में निकाल लूं, जिस भी स्टेज की बात करनी हो, उस स्टेज की अगर बॉयंसी में निकाल लूं, तो ये बॉयंसी किसके बराबर होगी? बताओ मेरे को. सर डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम. वेरी गुड. दैट दिस बॉयंसी विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टेबल्स एट दैट पर्टिकुलर ड्राफ्ट. करेक्ट बेटा? राइट? यस सर. तो जो शिप की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, जो कि अनचेंज्ड है, उसमें से इस वाली डिस्प्लेसमेंट को माइनस अगर मैं कर दूं, तो विल आई गेट द वैल्यू ऑफ P, yes or no, at that particular time, right? Yes. And this concept is going to be applicable through and through. ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. It will be applicable through and through. चाहे वो सर इस वाले फॉर्मूले के अंदर to get the buoyancy we should have draft at that particular stage. Correct beta. Exactly. Okay, so these are the two ways we can calculate P. One is if we can find the change in trim, but that will be equal or applicable only during the critical period. And the other is if we can find the displacement of the ship corresponding to the buoyancy provided at that draft for which we are interested.
we can just use that and find the value of P. ये दोनों यहां तक बेटा आपको क्रिटिकल पीरियड की डेफिनेशन, क्रिटिकल इंस्टेंट की डेफिनेशन और आपको हाउ टू कैलकुलेट P इसका देख लो, मुझे बताओ अगर समझ में नहीं आ रहा तो सर ये कंडीशन मान लो ऐसे है कि मतलब डॉक से पानी पूरा खाली नहीं हुआ है बट ये पूरा सिट हो गया है, तो उस टाइम पे वैल्यू ऑफ पी हम पहले वाले से निकाल लेंगे, बट जब पानी पूरा नील हो गया है उसके अंदर, उसमें जो होगा नहीं बेटा नहीं बेटा, मैं आपको बताता हूँ, आपको जो डाउट है समझ गया। अगर कल हम अपने एग्जांपल की बात करें जिसमें जहाज 5 और 7 मीटर से एंटर किया था, करेक्ट? जी सर। ओके, अब मैं इसको पूरे नैरेटिव को हाइपोथेटिकल वैल्यूज दे देगा, पूरी सुनाता हूं पहले आपको। शिप एंटर्स फ्लोटिंग फ्री, ड्रॉइंग 5 meters फॉरवर्ड, 7 meters aft. She is brought, she is aligned over the blocks. You start pumping out the dock. As the level falls, when the depth becomes 7 meters, that is the beginning of critical period. Correct, beta? Correct, sir. And stern makes the first contact with the blocks. Okay. As you continue pumping out, upthrust at the stern keeps increasing, causing a change in trim, and the trim starts reducing. Trim by stern starts reducing. Now, assuming that the blocks are all horizontal, even keel zero inclination pe hai. So when the trim becomes 0, that is the time you reach critical instant, correct? Correct, sir. Let us say, मुझे नहीं पता कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, but let us say when the depth becomes 5.5 meters, let us say when the depth becomes 5.5 meters, the vessel reaches critical instant. Okay, बेटा? ओके सर, ओके। ठीक। अब क्या हुआ, जब डेप्थ 5.5 मीटर थी तो ड्राफ्ट पीछे में भी 5.5 मीटर हो गया, आगे में भी 5.5 मीटर हो गया, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट भी 5.5 मीटर हो गया, करेक्ट? यस सर आगे तो 5 मीटर था ना सर पहले। बेटा जब ट्रिम चेंज हो रही तो आगे का बढ़ेगा नहीं। हाँ चलो हो गया, ओके ओके सर, ठीक है ना, करेक्ट? जी सर। इसीलिए मैंने 5.5 मीटर पे लेके गया था उसको, क्या नाम है, क्रिटिकल इंस्टेंट को। ओके, ताकि ये राइट, जी जी। इसीलिए मैं जब शुरू में बात कर रहा था मैंने फॉरवर्ड ड्राफ्ट पे कुछ भी कमेंट नहीं किया था, मैंने कहा उस पे मैं क्वेश्चन मार्क डालता जा रहा था बिकॉज दैट इज सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन एट ईच स्टेज, राइट? जी। So guys, if I'm telling you now that my ship is going to reach critical instant at 5.5 meters depth, what does it mean? It means when the depth of the water is 5.5 meters, the vessel will be just lightly touching the blocks all along the length. That means now the draft aft is 5.5 meters, draft forward is 5.5 meters, draft at center of flotation is 5.5 meters, draft at any point along the length of the ship will be 5.5 meters. In other words, the ship will be drawing 5.5 meters even keel, correct? हाँ जी sir. Yes. Any questions on what I just said, beta, before I go further? No sir. Okay. अब मान लो मैं पंपिंग आउट कंटिन्यू करता हूं, अब क्या होगा, जब ड्राफ्ट 5 मीटर होगा, जब डेप्थ 5 मीटर होगी, तो मैंने क्या कहा था, जहां जहां कांटेक्ट हो चुका है वहां पर डेप्थ और ड्राफ्ट साथ में चलेंगे, करेक्ट? जी सर। अब उसके बाद अगर डेप्थ 5 मीटर हो गई तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट भी 5 मीटर हो जाएगा, करेक्ट? जी सर। अब कितनी what is the volume of water displaced at 5 meters? Volume of water displaced at 5 meters will correspond to the displacement at 5 meters. What will be the weight of the water displaced at 5 meters? Weight, not volume. What will be the weight of the water displaced at draft of 5 meters will correspond to the displacement of the ship at 5 meters? Yes or no? जी सर। बोलो भाई। yes, जी सर। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर 5 मीटर डेप्थ में मुझे पी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 मीटर ड्राफ्ट पे शिप का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, दैट इज द अमाउंट ऑफ वेट ऑफ द शिप दैट इज सपोर्टेड बाय बॉयंसी, उसको मैं जहाज की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट से माइनस कर दूंगा एंड द डिफरेंस विल बी द वैल्यू ऑफ पी, करेक्ट बेटा? हाँ जी सर।
जी ओके ओके। अगर सर हमारा कोई भी अगर आफ्टर सिटिंग जो मतलब आगे एंड पीछे पूरा बैठ चुका है एंड इवन कील है, उसके बाद जितना भी बात इवन कील की है ही नहीं, पूरा नहीं भी बैठा कोई बात नहीं, अगर मेरे को बीच में कहीं भी हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट अगर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, जी 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 so समझ गया। then I can find displacement corresponding to that hydrostatic draft, and that displacement will be the value of buoyancy at that draft, right? हाँ सर Correct. And when we subtract this buoyancy from displacement of the ship, we will get the value of P at that particular moment, right, Vita? Yes, sir. Overall means ये है कि किसी भी टाइम पे if we are calculating buoyancy तो उसको आप actual displacement से minus Yes, करते yes, हैं and and can figure out I said this method can be applied anytime whenever you have enough data. Okay, sir. Okay. After sitting वो easily आ जाएगा because hydrostatic draft will be the same, yes, but उससे पहले we have to after calculate. yes, correct. After sitting वो easy हो जाएगा, बीच में भी, बट इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्रिटिकल पीरियड के बाहर ही यूज करना है, इसको तो जहां मौका मिले वहां यूज कर सकते हैं, राइट बेटा? बस हमें हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट चाहिए, चाहे कुछ भी ट्रिम हो, कुछ भी हो, क्योंकि आप तो टेबल तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से एंटर करोगे ना बेटा? जी 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 ठीक है ठीक है। ओनली थिंग इज जो ट्रिम चेंज वाला है वो जब तक कर पाओगे जब तक कि जहाज पूरा बैठा नहीं है। ओके सर। हाँ बेटा सर बोलो। ये सर समझ गए सर, इसको सर लिख लें सर एक बार, जो आपने बोला है सर, भूल जाएंगे बाद में। जो लिख लो जो लिखना, मेरे कोई जल्दी थोड़ी है, मेरे पास बहुत टाइम है, चिंता नहीं करो तुम। सर अपनी वर्डिंग से बता देंगे सर, बता दो प्लीज। नहीं तो क्या लिखना क्या चाहता मुझे नहीं पता, मैं तो क्रिटिकल पीरियड क्रिटिकल इंस्टेंट नहीं वही की सर। देखो कितनी चीजें लिखवानी है आपने। आपने एक तो क्रिटिकल पीरियड को समझना है, एक क्रिटिकल इंस्टेंट को समझना है, एक आपको ये अपने मन में रिवाइज करना है कि मैं मेरे को पी कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। जी सर। और पी के दो ढंग है, एक ट्रिम चेंज फॉर्मूले से, उसके साथ उसका राइडिंग लिमिटेशन लिख लो, और दूसरा है W minus W, in which means displacement of the ship minus the displacement or minus the displacement supported by buoyancy at that particular moment. तुम लिखो, जहां मेरी जरूरत तो बता देना बेटा, मैं यही हूं। जी सर। बेटा एक बार अपना ग्रुप चेक कर लो, मैंने ना ऑल द 3 बैचेस, प्लीज चेक योर ग्रुप। मैंने आपको ड्राई डॉकिंग और ग्राउंडिंग की कैप्टन सुब्रमण्यम सर की बुक की एक्सरसाइज भेजी है, और आपको साथ में MV विजय के पर्टिकुलर्स भी भेजे हैं, राइट? हैव ऑल द 3 ग्रुप्स रिसीव्ड? यस सर, रिसीव्ड। यस सर, रिसीव हो गया। हाँ तो आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो मैंने भेज दिया है। बुक है तो यू कैन यूज द बुक। ओनली थिंग इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट everyone who does not have a book is a better way of doing would be ये सिंगल शीट जो हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स की है इसको प्रिंट मार लेना। we'll be doing this exercise completely, all questions would be handled and tackled in the class, ठीक है? और ये हम MV विजय से क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि इसमें हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स की सिंगल शीट है, वहां से फटाफट, और इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस की. ओके, फर्स्ट वी विल फिनिश दिस ऑफ and then having understood the dry docking concept, then we'll address the other issues जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड है. So from tomorrow onwards I'll start this exercise with you. इसकी सारी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की हुई है, स्लाइड्स पे है मेरे साथ. लेकिन आपको अगर जिन्होंने नहीं किया है, आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है कल से पहले बेटा. आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि आप हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालने की प्रैक्टिस करें इफ द ड्राफ्ट्स आर गिवन. दूसरा, you should be able to enter the hydrostatic particulars with both hydrostatic draft or the displacement of the ship, and you should be able to interpolate the particulars फटाफट on the calculator on the run. हम अब phase 1 में हैं, हम अपनी आंसर शीट को इंटरपोलेशन दिखा दिखा के नहीं भरेंगे. All that would be done on the run and it will only the values will be put down in the answer sheet. Otherwise you'll go crazy and you'll lose out on the time. So कल से हम लोग इसकी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे. ये मैंने आपको इसलिए पहले भेज दिया कि किसी को ये शीट अगर प्रिंट करनी हो, बिकॉज हार्ड कॉपी इज ऑलवेज ईजियर टू यूज, यू कैन प्रिंट दिस. एक्सरसाइज को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है unless you just want to have something on your table. Exercise I'll be reading in the class. I'll be showing how I'll be doing is like this. Let me also show you the way we'll be dealing with it. I'll just remove the spotlight because 2-3 minutes. Let me just show you how we intend doing this exercise. Or you will be calculating with me. Malab, you'll calculate and then I'll show the results. ये तो हमने कल बात कर ली थी. Okay, it will be like this बेटा. Okay, मैं भी दिखा देता हूँ ये तो आपको. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है. Okay, it will be like this. So I'll leave this question here, ask you to find certain things, and then I'll go to my slides. You can keep telling the answers and then you'll keep seeing the things as we move on. So this is the way we'll be covering the questions, but you have to calculate, and please make sure you complete the entire thing in class with me, and let me revise through these PPTs, whatever we have discussed today. This slide we have done, 7 meters per we have done. 7 meters per the critical instant begins. There is no change in stability. Then we have 6.5 when we have the upthrust coming into picture. In fact, I should switch off the camera. Why should I take this space for yours? Okay. And we have this. Now at 6.5 meters, you'll have an upthrust coming, acting on the ship. Now, what is the value of P? I'm sure you'll agree with me here now. Okay, what is the value of P in this case? We all know value of P would be equal to the weight that has been transferred to the blocks. W minus B. B is the buoyancy at the instant in question. That will give us the P. Every time this is what can give us the P. Otherwise, we can use the change in trim concept. And you can see all this. We have effect of P on stability. But what is the effect of P on stability? The P will affect the static stability of the ship, causing virtual loss of GM. And it will also cause a change in trim. As it is virtual discharge from after perpendicular, it will cause a change in trim by head.
Virtual loss of GM is P into kg upon W minus P. We have already done it. Change in trim caused by P would be P into AF upon MCTC. Trim type A problem say. Now, this is what I was saying and which we agreed. If you want, you can take screenshot of this slide. If somebody was telling me, sir, dictate kar do. You can take the screenshot beta if you want. How to obtain P? Before the vessel takes to the blocks, that means during the critical period, we can calculate P by change of trim formula. And after that, or even during the critical period, at any time, if we know the displacement of the ship and we know the amount of buoyancy at that instant, which will be equal to the displacement at that instant, the difference in the initial displacement and the displacement of the vessel at that moment for that draft, the difference between the two will give us the value of P. ये बेटा आपके questions हैं. Describe critical period, describe critical instant. This is what has been discussed today. How would we calculate virtual GM beta at any time when we have to calculate? How do we calculate GM? Would somebody like to say first? How do we how do we get GM until this point of time? What have we learned? P into kg. नहीं इसका नहीं ये नहीं अब तक before dry docking process हम GM कैसे निकालते थे शिप का? KM minus kg. FSC sir. kg increase. Correct. So KM minus kg would give you GM solid. Okay. Minus FSC would give you GM fluid. Now you see here, why have we taken KM for W minus P? Dry docking में जो virtual GM की calculation करते हैं, इसमें हम KM हमेशा W minus P का क्यों लेते हैं? Would you like to answer this now? Sir, क्योंकि KM draft के हिसाब से change हो जाता है sir. Very good. जब upthrust picture में है, so W minus P is what is supported by buoyancy, correct beta? W minus P is supported by buoyancy? Yes sir. If W minus P is supported by buoyancy, that means the draft of the vessel is corresponding to that buoyancy, right? And Km depends on draft. Therefore, this Km has to be for W minus P and not for W. Okay. Why FSC? Also, we have taken FSM upon W minus P. Why? Because if you have virtually discharged from something from the ship, then the virtual weight of the ship, not the actual weight, but the virtual weight of the ship has reduced. So the effect of that free surface will also increase because of the virtual loss of displacement. So ship की अगर displacement कम हो गई है, वो virtually light हो गई है, तो obviously free surface will have more effect. And FSC would be equal to FSM upon W minus P. ये आ गया GM fluid. और last में इसमें हम बेटा अपना virtual loss of GM निकाल देंगे. By what formula? P into kg upon W minus P. GM fluid से जब इसको minus कर देंगे, that is going to give us the virtual GM at that particular moment of question during the dry docking process. This will be the flow of steps for calculating the virtual GM during the dry docking process. Dry docking process में virtual GM निकालने का, this will be the flow. And now I'll stop here and we'll go back to this if the need arises tomorrow when we'll start with question number 2. Now, why we are not starting with question number 1 is if you see the exercise up to question number 12 or 14. बेटा थोड़ा म्यूट कर ले बेटा बच्चे प्लीज. Question 1 and 2 are same. अगर आप exercise देखोगे, question 1 and 2 are same. फर्क सिर्फ इतना है, question 2 में ये FSM include कर दिया गया है. Otherwise, if you come up to this place, this part of the question is question number 1. When FSM is added, it becomes question number 2. So we will do it question number 2 because 1 में FSC will become 0. FSM 0 होगा तो FSC वहाँ 0 हो जाएगी. Rest everything will remain the
same. इसी तरह से 3 and 4 are same but for the FSM, 4 and 5 are same but for FSM. So इस तरह पेयरिंग हो रखी है. So बेटा हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जहां तक पेयरिंग है ऐसे जाएंगे. उसके बाद जहां स्टैंड अलोन क्वेश्चंस हैं, each one of them would be dealt with. So in other words, we'll be covering all 20 questions of this particular exercise. So kal, please have your scientific calculator ready. Please practice interpolation. Please learn to calculate hydrostatic draft. These are the few small expectations that I have from you, so that we are better prepared tomorrow and we can utilize it the period better. And with this I'll stop here. जो मैंने आज बोला है उसको रिकॉल करने की कोशिश करना. उसमें जो भी डाउट्स हों कल क्लास में, before I start, please feel free to raise your doubts. And whatever you mentioned to me in the morning about your concerns, your first, my suggestion would be, please first share with your course coordinator, and then let us see how we can address it. We'll try our best to make sure that you don't miss the physical classes, even if they start. And secondly, in any case, it is our responsibility to make sure that your doubts are taken care of. ठीक है बेटा, I'll sign out then. Is that okay? Okay, sir. Okay, bye beta. Thank you, sir. We'll catch up tomorrow. Bye bye. Thank you, sir. Bye bye.